हूँ थोड़ी देर में। अच्छा पहला वाला क्या कह रहा है? फर्स्ट वन, it's saying butane is oxidized to a mixture of carboxylic acids by oxygen in the presence of a catalyst. The acids formed a methanoic acid, an ethanoic acid, and propanoic acid, the first three members of the carboxylic acid homologous series. Give the name and structural formula of the fourth member. Fourth, चौथा कौन सा होगा? But. Meth, eth, prop. ठीक है, so it's meth, eth, prop, and then the fourth one is going to be butanoic acid. ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि you're supposed to draw the structural formula showing all the atoms and all the bonds. तो एक एक चीज शो करनी है. So 4 carbon atoms, it's a carboxylic acid, so that is double bond O and OH, and this one will have 2 H's, this one will have 2 H's, while this one will have 3 H's. तो ये आपके पास ब्यूटेनोइक एसिड. और फिर वो कह रहे हैं the 3 characteristics of the homologous series. There were actually 5. Okay, homologous series is a family of organic compounds that have 5 things in common. First one, number 1, okay, they show similar chemical properties. Okay, next one, they show trends in physical properties, which are not exactly the same, but they show trends in physical properties. Number 3, they have the same functional group. So if you want a number 4 is that they have the same general formula. And then you have number 5 as well. Okay, successive members differ by CH2. अच्छा फिर है कि the weak acids, what is meant by the term weak acid? So we did in the bottom page we did carboxylic acids, and we did discuss either alcohols, the condensed version. Just a second, alcohols पे कहाँ आ गए? बिल्कुल ही. So right at the bottom was carboxylic acid. So this one, carboxylic acids, I told you, I mean this thing, I told you they were weakly acidic. So they conduct electricity. They were weakly acidic. What that meant was कि अच्छा what that कहाँ पे लिखा है? ठीक है, what that basically ये अच्छा what that basically meant was that when you have a carboxylic acid, it tends to dissociate and ionize, but partially. It's a weak acid. That's the definition of what a weak acid stands for. So carboxylic acid का जो OH है, COOH, the OH is the one that loses an H plus one ion. So what is meant by the term weak acid? So it's an acid that partially ionizes. And produces fewer H plus one ions. तो आपने दोनों की definition करनी थी weak and acid. So acid is a proton donor. वो बल्कि just to be on the safe side अलग से भी लिख लो. What is an acid? It's a proton or an H plus one donor. फिर था कि he was asking कि carboxylic acid react with alcohols to form esters. Ethanol reacts with ethanoic acid to form
this specific ester. So it's saying give the name and formula of the ester which is formed from methanol and propanoic acid. So we can draw that. So how are esters formed? You got methanol, which is meth is 1 carbon atom alcohol. So this is how esters were formed. इससे पहले या इसके बाद, I think. I mean, somewhere down the line we did. I think this one. so we did esterification, which was what would happen is this is the ester functional group. So what would happen is that carboxylic acid, double bond O and OH, and an alcohol which has just OH. इसका OH, इसका H remove होते हैं. And this serial bond O joins with this oxygen to form the ester link. तो ये हो रहा है यहाँ पे. तो methanol with propanoic acid, which is a 3 carbon atom carboxylic acid. I told you to draw the functional groups right in front of them. So उनके आमने सामने draw करना है. And what will happen then is the OH would be lost and the H would be lost. You can rub them off. ये बीच में से चले गए और O रह गया था वहां पे. And these would connect over here. तो उससे क्या है कि इसका name and formula दोनों चाहिए. So I mean you can either draw this formula, or what you can do is you can draw a condensed version of the formula. ठीक है, किधर चला गया? Sorry, मैं end पे चला गया. So you can draw a condensed version. It's CH3 followed by O, then there's another CO, then there is CH2, and then there is another CH3. Okay, so it's CH3 with O, CO, CH2, and CH3. और इसको name करना है. The naming was done in 2 parts. I mean, you had one side is prop because it's got 3 carbon atoms. The other side has just 1 carbon atom, so that's meth. ये जो carboxylic acid वाली side है, that's O8. And this side is vinyl. So it's going to be methyl propanoate. That's going to be the formula of the ester. ठीक है, Saneem, is this clear? Yes, sir. So what is the name of the ester with the formula of this? So you can CH3. So CH3, then it's as a CH3, then it's CO, which is C double bond O. He already told us it's an ester. There's another O, and then there's a CH3. So इसको भी दोबारा 2 parts में divide करो. This side is eth. This other side is, because it's got 2 carbon atoms, this other side has 1 carbon atom. So that's your meth. Alcohol wali side jo hai, that's Yl. Double bond O wali side is O8. So the name would be methyl ethanoate. So if I complete the equation for oxidation, I mean, the equation is given, you just have to balance it. So that you can do. Hydrogens ko kar lete hain ki there are 30 over here. 6 4s are 24. So there should be 6 over here. और फिर oxidants की गिनती कर लो कि there would be hydrogens, पहले check कर लो. 6 hydrogens into 4 is 24, so there should be 6 over here. ताकि 30 हो जाए. Oxidants count कर लो. You've got 8 plus 3, 11. So this would be 11 by 2. As a name another compound which can be oxidized to propanoic acid. So you have to name something that gets oxidized to propanoic acid. अब ये पूरा जो आपने पढ़ा है ना, इसके अंदर there's only one place where you've actually studied oxidation, and that is with alcohols. ये बल्कि अगला part था. ये dehydration है. Oxidation of alcohols.
Oxidation of alcohols में इस green वाले को I told you that whenever you have an alcohol, तो alcohol जो है ना, it turns into a carboxylic acid. It forms double bond ON OH. तो जब भी आपके पास alcohol होगा, it turns into a carboxylic acid. तो so propanoic acid बनाना है तो it will be made from an alcohol which is going to be propanol. और ये यहाँ पे बना हुआ भी होगा कि you've got two oxidizing agents. I mean, this one, it's propanol turns into propanoic acid. Ethanol turns into ethanoic acid. तो ये बस याद रखना कि oxidation of alcohols जो है, it produces the corresponding carboxylic acid. वो OH के साथ एक और oxygen add हो जाता है. So that is oxidation. Saneem, is this clear? जी सर. अच्छा, अब ये कि just 1 second. अगला जो part है, that is कि now this is identify two common features in the formula of these carbohydrates. Remember, ये हमने discuss भी किया था, and we wrote this down in the notes as well. आखिरी चीज जो हमने पढ़ी थी ना, that was carbohydrates, simple sugar से जो बनते थे. These last ones. So I told you that you have a glucose molecule. Carbohydrates के बारे में मैंने कहा था कि they contain carbon, hydrogen, and oxygen, and the hydrogen and oxygen have a ratio of 2 ratio. They've got a 2:1. तो वो 2:1 है. So this is how complex carbohydrates were formed. The two common features, one is carbon, hydrogen, oxygen are present. And the second common feature is hydrogen and oxygen ratio is 2:1. अगर वो ऐसे कोई और चीज भी देते ना, आप इसको देख के ही कर लेते भाई क्या चीज कॉमन है इनके बीच में. You could have फिर उसने कहा include 3 glucose units in the structure. तो उसने कहा draw a complex carbohydrate. So we just did that. इसी को बस copy paste करना है. Remember I told you कि most questions on condensation polymers are pretty much the same. They always ask you to the same thing. I mean, they just ask you, I mean, these same things over and over again. That's it. तो आपने क्या करना है, उसने 3 ग्लूकोज के यूनिट्स बनाओ, उनको जोड़ना भी है, because you're supposed to make a complex carbohydrate. So it's going to be alcohol. The other one, again, it's going to be OH on both sides. Then the other one, again, it's going to be OH on both sides. और क्या होगा, इसका H रिमूव करना है, OH और H सारी रिमूव हो गए, बीच में एक ऑक्सीजन बच जाता है. दैट्स इट. अच्छा, इसका भी H, यानी HOH वाटर इज फॉर्म्ड. ठीक है, सारी रिमूव हो रहा है. जस्ट अ सेकंड. अच्छा, so H and OH get removed and you're left with an oxygen in the middle. तो अच्छा, this is what's going to be formed. Seem, is this clear? Yes sir. So what's an enzyme? It's a biological catalyst. That's it. They state the molecular formula and the empirical formula of this hydrocarbon. So molecular formula is the total number of atoms. So it's C4H8. Empirical formula is the simplest ratio. So that is C1 and H is 2. Let's hold on 1 second.
sorry. Draw the structural formula of an isomer. Isomer क्या होता है? It's the same molecular formula. इन्हीं को rearrange करना है, ठीक है? You've got to rearrange that. So C4H8 is, if you can, what you can do is, कि मैंने कहा था कि there are two, three ways. One thing is you can change the carbon chains. What you can do is, instead of a cyclic structure, you can have all the 4 carbon atoms in a straight line. और उसमें ना H add कर लो. There should be 8H. Same number of atoms. अब इसमें you've run out of hydrogen, so there must be a double bond somewhere. ठीक है, because you need just 8 hydrogens, not more than 8. तो double bond होगा. और इसके बहुत सारे isomers हो सकते हैं. What you could have done was कि the double bond position could be in the middle. Or it could be that the carbon atoms could be arranged in this manner. So the only thing is you just have to rearrange the atoms, 4 carbons and 8 hydrogens. So इसमें देख लो, there should be, I think, 8, and the structure has to be correct. Every carbon atom should be making 4 bonds. So the easiest one was the first one. Saneem, is this clear? Sir, yes. Could it be methyl propane? नहीं, it can't be, क्योंकि एक तो वो है कि इस तरह के जो formulas है ना, you don't have to learn how to name them. Methyl propane is going to be this one. ठीक है, आपको बस नेम जो है ना वो सिर्फ स्ट्रेट चेन का होना चाहिए, आना चाहिए. I mean, आता है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, but it can't be methyl propane. Like I mean, this is, इसको बल्कि छोड़ो, propane is an alkane, right? So why am I making alkenes? The reason I'm making alkenes is कि अगर मैं यहाँ पे double bond ना लगाऊं ना, तो I need to make a 4th bond. तो मेरे H ज्यादा हो जाएंगे. It's going to be an alkane and it would be C4H10. ठीक है. Alkenes होते थे जो CnH2n होते थे. That was the general formula of alkenes. सलीम, ये clear है? जी ठीक है. अच्छा, फिर explain why these hydrocarbons are isomers. तो definition बतानी है कि they are isomers because they have the same molecular formula, in the same number of atoms. But different empirical formula. Are these two hydrocarbon members of the same homologous series? Give a reason for your choice. They're not the same homologous series. You get this one is an alkane. Single bond, they're saturated, ठीक है? Alkanes were saturated hydrocarbons. और हमने जो भी बनाया ना वो unsaturated है. They're alkenes basically. इसका मतलब है उसने जो बनाया था वो कुछ और है, हमने जो बनाया वो कुछ और है. So they're not the same. वो आप लिख दोगे, ठीक है? They're not. और मतलब रीजन भी बता दो. फिर explain the meaning of the term cracking. So cracking is the process when long chain hydrocarbons are broken down. अच्छा, are broken down into smaller, more useful chains. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. और ये हम तब करते थे, मतलब शुरू में हमने किया था, खासतौर पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद, कि आई टोल्ड यू के कहाँ गया? अच्छा, यहाँ पे I told you when you did fractional distillation, I told you that large molecules are not very useful because they've got the crude oils, you got this lots of tars and waxes and high melting boiling point substances.
which are not very flammable. So like your residue, which is bitumen or waxes, then they don't burn easily. तो आप क्या करते हो, आप उनको क्रैक करते हो. What you do is कि आप उसको literally crack करते हो. What you do is कि temperature ले जाते हो. I mean, you've got a big molecule. You increase the temperature. There's thermal cracking, which is that they bump into each other and they start breaking down into smaller pieces. So they literally break down into smaller pieces. So 60 carbon atom का तो छोटे-छोटे pieces बन जाएंगे. So 1 mole of an alkane when cracked produces 1 mole of hexane and 2 moles of ethene. तो cracking हो रही है. और से क्या कि क्या बना है? It got 1 mole of hexane, which is C6H14, and 2 moles of ethene, which is C2H4. और उसके 2 moles हैं. Now, remember, I also told you that how do you figure out the original molecule? The way you figure out the original molecule is you just add them up. क्योंकि उसी को तोड़ के ये सारा बना था. It's basically 10 carbon atoms and 14 plus 8, that's 22 hydrogen atoms. ठीक है? वो सारे इकट्ठे होंगे. फिर इसका पॉलीमर ड्रॉ करना है. इट्स अ पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स. एल्कीन्स में आई टोल्ड यू कि डबल बॉन्ड को बीच में सेंटर बनाओ. ड्रॉ नथिंग ऑन द राइट और लेफ्ट साइड. तो इसके ऊपर H है, देयर इज CH3. और इस तरह अच्छा उससे कोई स्पेसिफिक नहीं कहा कि कितने बनाने. ऑल यू हैव टू डू इज मेक श्योर यू एटलीस्ट ड्रॉ 3. तो इनके डबल बॉन्ड बीच में से खत्म हो जाएंगे and they would start linking up and a polymer would be formed. They give the name and product formula of the addition product formed from ethene. तो ये alkenes के सारे alkenes के addition reactions होते थे. कहाँ है हमारा alkenes? अच्छा, all alkenes underwent addition reactions. कि आपके पास जो ये डबल बॉन्ड होता था ना, इस पे चीजें आके ऐड हो जाती थी. जैसे ब्रोमीन्स ऐड हो गए. अच्छा, ब्रोमीन्स ऐड हो गए तो ये डबल बॉन्ड्स पे ना चीजें आके ऐड हो जाती थी. तो that is I mean water ऐड हो जाता था. डबल बॉन्ड, wherever you see a double bond, H and OH ऐड हो जाते थे. So you had these addition reactions. Hydration में hydrogen got added. So same thing. उसने कहा कि draw the product. So I'm going to draw the product on this. I mean it's the same thing. उसने कहा bromine के साथ reaction है. So it's HH. अच्छा, बीच में डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा and bromines will get added to it. तो एक यहाँ पे. So that's the answer. Salim, is this clear? जी सर. उसने क्या structural formula name भी क्या हुआ उसने. Actually this is so उसने specifically इसका कहा है. एक सेकंड. Can we give the name? ठीक है, इसको name. Salim, what name would you give this? How many carbons it's got? 2 carbon. No, wait. Will it be dibromoethane? नहीं, काउंट करो, ये भी तो कार्बन है. अच्छा, रिमेंबर दिस, मैंने पहले एक दफा कहा था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ना सीधा करके ड्रॉ करो या उसको बेंड करके ड्रॉ करो. इट्स द सेम थिंग. मतलब ये दोनों जो है ना एग्जैक्टली सेम है. I mean, is this clear? 4 carbon atoms in a straight line or 4 carbon atoms like this? They're exactly the same thing. Yes.
तो ये 4 कार्बन एटम्स इस तरह करके ड्रॉ हुए हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन एटम्स क्या होते हैं? ब्यूट। ठीक है, तो ये डाइब्रोमो ब्यूटेन होगा। और ऊपर से ना उन्होंने ब्रांच, सो रिमेंबर दिस इज नॉट अ ब्रांच, आई मीन इट्स अ स्ट्रेट चेन। वो बस ड्रॉ थोड़ा टेढ़ा करके उन्होंने किया हुआ है, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब ये कि अगला जो है ये तो हो गया। अच्छा, अगेन एस्टर्स, पहले तो व्हाट वुड यू नेम दिस? उससे वैसे नेम करने को नहीं कहा, लेकिन व्हाट हाउ वुड यू नेम दिस? व्हाट्स द नेम ऑफ दिस? eth ethyl propane. नहीं, एस्टर के, अच्छा एस्टर के इर्द गिर्द ये मतलब ये एस्टर लिंक है, ठीक है। तो इधर इस हाउ मेनी कार्बन यू गॉट? 1, तो क्या नाम होगा, स्टार्टिंग नाम क्या होगा? Meth. सो दिस इज मेथ। और इधर क्या होगा? 4 कार्बन एटम्स, But. ठीक है। अब बताओ क्या नाम होगा? मेथ वाली साइड एंड किससे होगी? द सिंगल ओ साइड, Methyl. ठीक है। और वो डबल बॉन्ड ओ वाली साइड जो है दैट्स O8 हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स मिथाइल ब्यूटेनोएट। दूसरा बताओ कि which alcohol and which carboxylic acid are used to make this? Methanol and butanoic acid. ठीक है। अच्छा, मोल्स का क्वेश्चन आ गया कि इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन है 1:1 है सारा, ठीक है। दूसरे का मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड निकालो, मोल्स ऑफ एथेनॉल 6 ग्राम, एथेनोइक एसिड 5.5 ग्राम्स, तो 6 ग्राम एथेनोइक एसिड एंड आई थिंक 5.5 ग्राम्स की वो बात कर रहा है उसकी एथेनॉल की, राइट। और एमआर भी दी हुई है, इसकी एमआर 60 है और इसकी एमआर 46 है। तो कितने मोल्स आ रहे हैं दोनों के? 0.1. पहले के 0.1 और सेकंड के 0.119. अब मुझे बताओ कि उससे आगे जाके पूछा होगा कि एस्टर के मोल्स निकालो, राइट। बल्कि पूछा है, मतलब वही पूछा हुआ है। ही इज आस्किंग फॉर द moles of the ester and the limiting reagent। अब बताओ कि इन दोनों में से which one, मतलब if you want to find the moles of this thing, है तो सारा 1:1, but would you use these moles or these moles? I don't understand your question. Limiting excess याद है? Limiting excess, it's 1:1, right? ये basically question है कि NaOH, let's say NaOH और HCl ना 1:1 में react कर रहे हैं, right? And it's forming NaCl plus H2O. They're reacting in 1:1, that means कि अगर मैं 50 NaOH 550 molecules of HCl में ऐड कर दो, मुझे बताओ कि आगे कितना NaCl प्रोड्यूस होगा?
Salim, did you get the question? Hello? Salim, ये वाला क्वेश्चन समझ आया था ये वाला? Hello? Hello? Salim, can you hear me now? Yes. अच्छा, इसका मैं कह रहा था कि अगर if I add, I mean the equation says कि it's 1:1, the react in 1:1, तो 50 को अगर मैं 550 के साथ react करूं, तो how much NaCl would be produced? Give me a second. $50. ठीक है, मतलब वो क्लियर है कि दिस इज एन एक्सेस, वो लिमिटिंग एक्सेस हमने एक टाइम में पढ़ा था, क्योंकि 550 तो चाहिए नहीं है, 50 would react with just 50, right? And it would go on to produce 50, right? क्लियर है? जी सर. तो इसका बता दो कि 0.1 कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 0.1 के साथ ना, राइट? सो दैट मींस दिस इज एन एक्सेस, राइट? Yes. So 0.1 will only react with 0.1 to produce 0.1, right? क्योंकि एक तो वैसे 1:1 था, और so 0.1 will react with 0.1 to produce 0.1. तो इसका मतलब ये एक्सेस में है. The other one is the limiting reagent, this one. तो आप हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स यूज करते थे. किधर चला गया हमारा? एक सेकंड. ये तो लिमिटिंग रिएजेंट इज द फर्स्ट वन, जो कि मेरे ख्याल से इट वाज एथेनोइक एसिड, और 0.1 मोल्स प्रोड्यूस होंगे, और एमआर दी हुई है, तो मोल्स इनटू एमआर इज so moles into MR is mass. So 8.8 grams. See, is this clear? Yes sir. अच्छा, अगला वाला आ गया उसका. एक सेकंड रखना.
अच्छा ये पॉलिएस्टर्स का उन्होंने क्वेश्चन दे दिया व्हिच इज एग्जैक्टली द सेम दैट वी स्टडीड। बिल्कुल एंड में जो हमने पॉलिएस्टर्स किए थे एग्जैक्टली वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ गए हमारे पॉलिएस्टर्स, पॉलीएमाइड्स थे, पॉलिएस्टर्स दिस वन। सो इट्स एग्जैक्टली एग्जैक्टली नहीं, दिस इज एमाइड, पॉलिएस्टर का है, ये पॉलिएस्टर्स है। So you're going to have an alcohol and a dicarboxylic acid, वही काम होगा, तो उसने वही दिया हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली वही दिया हुआ है। It's a dicarboxylic acid. तो उसने draw the structural formula of the polyester include 2 ester linkages. तो इधर carboxylic acid है, तो उसने कम से कम 2 ester linkages हो। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, दो तो इसका OH आएगा, इसका H, इसका OH, इसका H। और ये बीच में ऐसा लिंक बन जाएगा, ठीक है। इसका भी OH रिमूव होगा और इस साइड पे वो कंटिन्यूएशन बॉन्ड लाजमी शो करने, ठीक है। इट्स कंटिन्यूइंग ऑन बोथ साइड्स। सलीम, इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो ठीक है, ये मैं आपको फिर भेज रहा हूँ। इसमें उसे वन एस्टर डिस्क्राइब टेस्ट, एक अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड्स है, टेस्ट हमने किया था वो अल्कीन ब्रोमिनेशन होता है, ठीक है। ब्रोमीन ऐड कर दो, बियर टू एक्वस, अल्कीन्स का बेसिकली टेस्ट। व्हेन ही सेज अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड, दैट्स बेसिकली unsaturated is when you have carbon and carbon double bonds, ठीक है। So result with unsaturated is कि bromine react कर जाएगी, so it will get decolorized. और सैचुरेट का कि इट्स नॉट गोइंग टू गेट डीकलराइज्ड, ठीक है। तो ये टेस्ट है, ये बार बार आता है। अनसैचुरेट, कभी वो एल्कीन्स लिखा होता है, कभी बस अनसैचुरेट लिखा होता है। इट्स अ टेस्ट। ठीक है, ये मैं आपको भेज देता हूँ, इसी के और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ओके, देखिए, Love this. हाफिज।